Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is a Hindu and Indian Express. So possibly I'll be covering the all important news that has been reported, and additionally I'll be supplementing the news with relevant information so that they can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 29th of December and these are the list of the topic for the day. The first is India first driverless train. The second is India to start the vaccination soon. Third, RBI suggestion on maintaining the inflation targeting. The second last topic is performance of Kisan rail train. And the last topic is graded globalization framework. Apart from this, I'll be also discussing about the MCQs at the end of this session and the explanation of yesterday question so that you could practice some important questions. So stay tuned till end of this session for practicing some questions. Now without any further ado, let's get started with the topic. The first is India first driverless train. This has been reported in the Hindu because this is for the first time in the country that the driverless train has been operating, and this is in the metro, not in the usually the regular railway train which was operating in India. तो बात करें इस तरह के आर्टिकल की, so this is on contemporary and modernization of Indian railways or talking about the rapid metro services. So this would be contributing to your general studies paper 3, and in general this would be relevant for the prelims examination as well. So yesterday itself, the Prime Minister has inaugurated country first driverless train on the Delhi Metro Magenta line. Actually, Delhi Metros has number of nine line with the name of color like blue, yellow, green, magenta, purple. These are the sort of line. You can refer to their official website for further details. So the driverless train is also known as driverless train operations, known as DTO. So DTO क्या है? This was initially a train operator to be present in the train to be still for the confidence and assistance. इंडिया में अभी जो DTO ऑपरेट की जा रही है वहाँ पे still there would be a train operator because until the things are fully functional, they already had a trial, but to conclude on a safer side, operator would still be present for the further assistance. Now talking about the DMRC, that is Delhi Metro Rail Corporation, they have Inteltel elite gig of 9% of the world class metro network operating without the drivers. अगर ये और भी line में include की जाए, because initially they have started only one line, they have 9 to 10 line in the metros. So once it is become operational, जो वर्ल्ड की 7% मेट्रो है DTO में जो ऑपरेट करती है उसमें 7% contribution DMRC की होगी. Now talking about the expansion of metro services, although Prime Minister after inaugurating, he has addressed the nation and he said that by 2025 metro services would be expanded to 25 cities. For time being, at present, we have metros in the limited cities like Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru, Mumbai and Jaipur, right? They're also operating in Hyderabad as well. And some of the work is still started, they're under progress. So very soon, the country is planning to operate with the 25 cities. Now talking about Delhi, in metro have become operational in 2014 itself. And at that time, the length was 248 kilometers. And this was operational. Talking about present, the Delhi Metro has an expansion of 398 kilometers. So it is operating an approximate area of 400 kilometers. Now DMRC is currently have 5 such driverless trains that will be operated by June 2021. They are further augmenting the services of the driverless train, and the line would also be created because government is planning to expand it to 1700 kilometers by 2025, right? So this is a future plan and the expansion of metro services in India. Now talking about the enabling ease of life or ease of living, as you know, when we have urbanization, the first and foremost thing that is the first and foremost thing that come to us mind is like ease of living, right? So the Prime Minister said that expanding metro network would be an indicator जहाँ पे ease of living को promote किया जाएगा for citizen, और इसके साथ साथ जो passengers होंगे they would have less workload and less panic to travel, and again at the same time the metro line की जो version होगी that would be very concrete, right? So this is a version of Metro Light, and Metro Neo is again a new plan that is being planned for the other ridership cities where have less number of population. तो अलग अलग characterize किया गया है. If you buy a cell phone, you get it advanced version, its pro version, its light version. The same case as with in the metro services. The government is planning a Metro Light version and the another called Metro Neo version, depending upon the population of the city and the availability of infrastructures.
Now it would also build 25% of the cost of the Nirmal metro जो अभी कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि आप अगर दिल्ली मेट्रो की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द मेट्रोज आर अंडरग्राउंड and they are made using the tunnel process, right? So tunnel process is again a lengthy and a costly process which has a lot of budget to do. So अगर बात करें मेट्रो न्यू और मेट्रो लाइट वर्जन्स की तो वहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो कम रहेगी. And cities where there are large number of water bodies are there, so the system of water metro is also undergone. So government is planning to work on the water bodies or metro on the water itself. Now national common mobility card भी launch की गई है. So this is a national common mobility card was introduced by the Prime Minister himself on the used on airport expressway line. So this common mobility card would help passengers to travel in any of the metro line. No, considering any of the line you are traveling, or either you are traveling on the airport expressway, and this is also valid for the bus services which is available in Delhi. So they're mostly applicable in the metro cities like Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. Now talking about the NCMC, this is National Common Mobility Card. This will give access to all mode of transport that will help to do away the long queues and tokens. So you don't need to buy tokens every time you're traveling. You don't need to be there in the queue as in the normal procedures. So this would help to get a common mobility card and giving you some discount as well on your travel. So this is all about the National Common Mobility Card. Now moving to the second topic, that is India to start the vaccination soon. The news was reported in the Hindu. The relevance of this article or the news is there in your General Studies paper 3, also relevant for the General Studies paper 2. So very soon, this official confirmation has come from the Union Health Minister that India would start its vaccination process within a week, right? So as promised by the Health Minister that January 1st week, India would be starting its vaccination process. And talking about the number of population they are targeting, still we have targeting very less number of people. So according to the Union Health Minister, during the launching of the pneumococcal conjugate vaccine, this is a conjugate vaccine known as Pneumonosil. This was being launched, and on that particular launch, he stated and he has confirmed that India would start its vaccination process by first or second week of January. So the vaccination is being developed by the SII, known as Serum Institute of India. This is the first and foremost runner-up company in India, and this stand as a world largest manufacturer of the vaccine. पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इंडिया में established है, located at Pune, that they are the world largest manufacturer of the vaccines. Now talking about the manufacturing of AstraZeneca vaccine, which is being developed in collaboration with SII, with the Oxford University, they're also vaccine known as AstraZeneca COVID-19 candidate, which has emerged as a front runner in getting the emergency approval of the अप्रूवल इन द इंडिया इटसेल्फ. बिकॉज अगर बात करें अप्रूवल की तो सिट्सको और ICMR के दोनों के कंसल्टेशन के बाद ही अप्रूवल मिलती है, एंड इट्स अप्रूवल इज ऑल्सो अवेटिंग इन UK, राइट? तो UK ने भी अभी इसको ऑथोराइज नहीं किया है फॉर सिटीजन. दे हैव ओनली ऑथोराइज इट टू बी यूज्ड ऑन द इमरजेंसी पर्पसेस, नॉट फॉर द नॉर्मल सिटीजन. सो वंस दिस इज अप्रूव, अ चंक ऑफ बिलियंस ऑफ डोजेस द COVID-19 वैक्सीन वुड बी अवेलेबल इन इंडिया एज वेल. तो बात करें अगर वैक्सीन स्टॉक पाइल की, तो जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा कि वी हैड ऑलरेडी 40 to 50 million of doses, that is also known as Covishield, which is stockpiled at present. और अगर रेगुलेटरी अप्रूवल की बात करें तो जब अप्रूवल मिल जाएगी तो इट विल प्रोड्यूस अराउंड 300 million doses बाय जुलाई 2021. सो दिस इज अ टारगेट दैट कंपनी हैज सेट, और ये सिर्फ एक कंपनी की टारगेट है. और इंडिया में अगर ऐसी बात करें जो वैक्सीन कैंडिडेट है, 3 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि दे आर वेरी सून टू स्टार्ट देयर मास प्रोडक्शंस, राइट? तो अगर आप इसको मल्टीपल करेंगे 300 into 3, इट विल बी क्लोज टू 900 million doses ऑफ द वैक्सीन. सो पॉसिबली बाय एंड ऑफ दिस ईयर द एंटायर कंट्री कैन बी वैक्सीनेटेड. नाउ SSI हैज ऑल्सो नोटेड कि जो फर्स्ट 6 month होगी पूरे 2021 की, वहाँ पे शॉर्टेज भी हो सकती है वैक्सीन की, बिकॉज द डिमांड आर लार्ज एंड द प्रोडक्शन इज वेरी लेस compared to the global population. We are not only targeting India, we are targeting world. तो पूरे विश्व में इस ज़रूरत को पूरे करने के लिए जितनी कंपनीज चाहिए या जिस तरह के लॉजिस्टिक्स चाहिए, जिस तरह के प्रोडक्शन चाहिए, वो कम पड़ सकती है आने वाले 6 महीने तक. Now coming to the COVAXIN initiative, COVAX की अगर बात करें तो ग्लोबल इनिशिएटिव है that is working towards the global equitable access of COVID-19 vaccines. और यहाँ पे 50% ऑफ मैन्युफैक्चर वैक्सीन है जो शेयर की जाएगी इंडिया के साथ, एंड एट द सेम टाइम अदर
country which are in the partnership with the COVAX. So initially India would have more doses of vaccine since the global clearance will take place in an additional month. और आने वाले कुछ महीने में अगर अभी एक प्लेयर है, दूसरा एस्ट्राजेनिका, वी हैव अनदर वैक्सीन दैट इज अलाइंड, तो 3-4 वैक्सीन कैंडिडेट है, अगर इनको अप्रूवल मिलती है तो मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है इंडिया में. Now also India has a large number of population, so we would probably be ending up the majority by 50 million doses at the first. So initially they would start gradually by July or August and we would be possibly covering half of the country. Now coming to the vaccine for pneumonia which was launched, so giving the details about the SII pneumococcal conjugate vaccine, company said that it would be a tailor-made case of pneumonia reported in India. And the CEO of Serum Institute of India, Mr. Poonawalla, has said that this would be the most affordable vaccine for pneumonia in the whole world, right? So talking about the Serum Institute of India, they have some good reputation in the world in terms of manufacturing the vaccine and also the pricing. So they have very competitive pricing in the market compared to the global pricing, right? So these are some of the important and relevant points with regards to this news. Now moving ahead, that is RBI's suggestions on maintaining the inflation target. So inflation target has become very significant after COVID-19 post recovery, because अगर inflation target की बात करें तो RBI के पेपर ने भी कहा है कि 4% तक appropriate होगा inflation को target करना. So the relevance of this news would be in General Studies paper 3 and equally important for your prelims examination. So first, according to the RBI working paper जो है that measure the trend of inflation in India, this was the research paper that was actually being published by the Reserve Bank of India. उन्होंने suggest किया है कि अगर inflation को target किया जाए तो वो appropriate होनी चाहिए close to 4%, right? So this is what the report has to quote. Now the paper says that the estimate trend of the inflation in India would be somewhere close to 4% only, and it aims to find the answer and question that goes route to the flexible inflation target, FIT. So you can call in short FIT, that stand for flexible inflation targeting. What is FIT? Now what is flexible inflation targeting? So talking about the flexibility in the inflation, flexibility targeting stand for at a monetary policy and a strategy used by central bank to maintain the price level within the certain range. एक इस तरह की टारगेट होती है जो कि सेंट्रल बैंक टारगेट करती है. टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल बैंक इन इंडिया वी हैव आरबीआई, और यूएस की अगर बात करें तो यूएस में यूएस फेड होती है. हर कंट्री की अपनी सेंट्रल बैंक होती है जो कि उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है. सो देयर इज टू पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी. सो फिजिकल पॉलिसी इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज बीइंग हैंडल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट नेशन, राइट? तो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है दैट इंडिकेट्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एज अ प्राइम फैक्टर इन द मॉनेटरी पॉलिसी. तो किसी भी कंट्री के लिए उसकी मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइस स्टेबल होना एक सबसे अहम बात है, एंड दीज आर सम ऑफ द मोस्ट पाइवोटल थिंग दैट एनी सेंट्रल बैंक हैज टू लुक अपॉन. Now talking about the inflation targeting in general, it is known to be a more stable, predictable and transparency in deciding the monetary policy. तो जो 3 कंपोनेंट या 3 इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो पहली होगी स्टेबिलिटी, सेकेंड वुड बी प्रिडिक्टेबिलिटी एंड थर्ड वुड बी ट्रांसपेरेंसी, राइट? एंड दिस इज बिकॉज टू ऑगमेंट द राइजिंग प्राइस दैट क्रिएट अनसर्टेनिटीज एंड एडवर्सिटीज अफेक्टिंग द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. बिकॉज जब भी आपने देखा होगा इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज करनी पड़ती है सेंट्रल बैंक को, और उसके जो पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस है वो इन्वेस्टमेंट्स में भी होते हैं, और साथ के साथ जो अनसर्टेनिटी मार्केट में जाती है तो ओवरऑल जो परचेजिंग पावर में उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग. नाउ कमिंग टू द टारगेट ऑफ द इन्फ्लेशन, व्हाट वाज एक्चुअल टारगेट दैट वाज सेट फॉर इंडिया. So 4% of the inflation with an upper tolerance limit of 6% and lower limit to 2%, right? तो सेंटर ने कंसल्ट किया था आरबीआई के साथ 2016 में ताकि इसकी वैलिडिटी बनाई जा सके, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन एंड मेंटेन अ टारगेट विच इज बीइंग 5 और 6 ईयर ओल्ड. तो इस टारगेट की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो रही है मार्च 31, 2021. इसी को लेकर के रिसर्च पेपर पब्लिश की गई है. तो पूरी बात इसी के इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस कि इस रिसर्च पेपर में यही कहा गया कि जो पुराने टारगेट थे 4% के, उसको साथ ही गवर्नमेंट को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए.
बिकॉज कोविड-19 हैज मेड द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हैज डिग्रेडेड. जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो कम हुई है, लाइवलीहुड कम हुई है, इवन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज हैज अगेन बीन ह्यूजली डिक्रीज्ड. नो, टॉकिंग अबाउट 20 to 30% डिक्रीज होने पर तो ओवरऑल इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है. So this is what the target has to be set and to be continued further. The paper find steady decline in the trend of inflation to 4.1 to 4.3% since 2014. Now, maintaining the inflation target at 4% is appropriate for India. This is what the research paper has to quote by the RBI. और अगर इसको गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, बिकॉज द थिंग्स वुड बी क्लियर इन बजट वंस द बजट इज देयर, बिकॉज बजट में आप फिजिकल पॉलिसी जानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस को सजेस्ट कर सकती है. बट आई पर्सनली फील कि ये जो रिसर्च पेपर है आरबीआई कहीं ना कहीं उस चीज को अधर करेगी एंड दे विल स्टिक टू दिस टारगेट. मार्जिनली दे वुड इंक्रीज टू 4.1 और 4.3, but I feel this would be somewhere close to this percentage only. Now, India's inflation target is set to review in the March 2021. So let's see. We'll again discuss once there's a revision in the target of the inflations. Now, the other topic, that is performance of the Kisan Rail train. The news has been reported in Indian Express, and a new number of 100 train have been inaugurated by the Prime Minister himself. So this would be relevant for your General Studies paper 3 in the paper 3 itself. And Kisan Rail as a concept is important for the prelims examination. They can ask you some fodder point with regard to the Kisan Rail train. So recently the Prime Minister has flagged 100 train which name it Kisan Rail train. और जो रूट रखी गई है that is देवली and दानापुर is the most popular. So दो ट्रेन रूट सबसे ज़्यादा फेमस थी. देवली is in Maharashtra and दानापुर is in Bihar, right? So this has been the most favorable route और अभी इसको extend करके Sangola and Muzaffarpur. Sangola is again in Maharashtra, Muzaffarpur in Bihar. And Muzaffarpur is famous for his lychee. You know, mangoes and lychee are the most popular item that is being that is hugely being produced in Muzaffarpur. Now, milestone की अगर बात करें तो अभी तक जो ट्रेन्स चल रही हैं फेरीड के बीच में, सो दिस इज लाइक 27,000 टन्स के बीच प्रोड्यूस अभी तक जो फेरी सर्विसेज हैं या जो ट्रेन की सर्विसेज हैं उन्होंने इतने टन्स प्रोडक्शंस को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया है. एंड हाफ ऑफ द स्ट्रिप हैव मेड सो फार वेयर ट्रेन रनिंग बिटवीन द देवली इन महाराष्ट्र एंड दानापुर इन द बिहार हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. तो ऑलमोस्ट 27,000 टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैज बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट. Now, what are the advantages of this Kisan Rail train? तो सबसे पहले मल्टी कमोडिटी ट्रेन होगी ये, जहाँ पे ये कैरी करेगी स्मॉल क्वांटिटीज को भी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लार्ज क्वांटिटी की बुकिंग कर सकते हैं. जो स्मॉल फार्मर है, जो इंडिविजुअल फार्मर है, वो भी इस ट्रेन की फैसिलिटी ले सकते हैं. एंड देयर वुड बी नो मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ द कंसाइनमेंट. गवर्नमेंट ने इससे एग्जेम्पशन दी हुई है कि किसी भी जगह पे कोई नंबर असाइन नहीं की जाएगी, ना तो कोई मैक्सिमम साइज होगा. जिसको जितना भेजना है वो भेज सकते हैं. Now, government has extended the subsidy of 50% on the transportation of fruits and vegetables. जो fruits और vegetable होंगे उनमें सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से 50% तक अवेल की जाएगी, right? Now, coming to the Kisan train, because we are discussing a Kisan rail, so it is very important for you to know कि Kisan rail है क्या, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. So, यूनियन बजट 2020 में इसको प्रपोज किया गया था to build a national cold supply chain, जहाँ पे जो पेरिसेबल आइटम्स होते हैं, लाइक पेरिसेबल वैसे आइटम्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट, जिनकी शेल लाइफ काफ़ी कम होती है. तो पेरिसेबल आइटम्स में आते हैं मीट, मिल्क एंड फिशेस एंड सम फ्रूट्स लाइक एक्सोटिक फूड्स जो इंडिया में भी प्रोड्यूस हो रही है आजकल. अवोकाडोज आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. कीवीज का भी बहुत जगह महाराष्ट्र में हो रहा है. स्ट्रॉबेरीज, दीज आर द फ्रूट्स दैट हैव वेरी लेस सेल लाइफ. नाउ किसान रेल ट्रेन की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे के साथ ऑपरेट की जा रही है थ्रू द पीपीपी मोड. पीपीपी स्टैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो ये ट्रिपल पी मोड पे काम करेगी. एंड द ट्रेन would bring perishable agriculture produce like vegetable and fruits in the market with a very short period of time. Like if you are a producer of kiwi or you're a producer of avocado, you can have your fruits dispatched from one state to the another state within 24 or 48 hours. So this train is also realizing the goal of doubling farm income, जो कि अशोक दलवाई कमेटी ने रिपोर्ट की थी कि अगर फार्म इनकम को डबल करना है तो उसमें कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए. सो दिस इज अ पॉइंट विच यू कैन राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन. एंड द लोडिंग ऑफ
underloading perishable commodities would be permitted under en route stoppage. तो en route stoppage में भी अगर आप कुछ चीज़ों को उतारना चाहें या फिर ऐड करना चाहें, that facility is available en route, right? So this is all about the Kisan Rail Train. Now the last topic, that is gated globalization framework. This is an editorial reported in the Hindu, and this is written by Jain Sinha. He is a member of parliament from Hazaribagh in Jharkhand. Now coming to the part of the details that is mentioned in the editorial, let's talk about that in the third decade of the 21st century, the multipolar world has awaits amid the changes of the post-pandemic realities. And India need to be swift in identifying the partners who it can trust and whom it can further interest. Now, after post-COVID-19, the entire economy, the roadmap and the strategy has changed. Every country is taking its own caution in terms of the economic development, trade and talking about engagement with other countries in any bilateral activities. So limited choice है वैक्सीन के लिए, COVID-19 वैक्सीन is aligned and talking about the partnership. अभी तक ये एक्सपेक्टिज्म बरकरार है कि चाइना से वैक्सीन ली जाए और रशिया की जो स्पुतनिक 5 है दैट इज ऑलरेडी अलाइंड बिकॉज रशिया इज आवर फ्रेंडली पार्टनर and we have been trusting Russia for a long time. Since independence, Russia has been the immediate supporting partner of India. So but still we have very limited choice. अभी तक इंडिया के पास जो चॉइस है वो यूके की वैक्सीन एस्ट्राजेनिका है. उसके अलावे मॉडर्ना इज इन यूएस एंड फाइजर विच हैज अगेन गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द यूएस एफडीए. उनके अलावे वी डू नॉट हैव मच चॉइसेस एज ऑफ नाउ. इंडिजिनस में हमारे पास सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन ऑलरेडी है और भारत बायोटेक दैट इज अगेन इन द फेज 2 और फेज एट द एंड ऑफ द फेज 3 ट्रायल. दे वुड बी ऑल्सो वेरी सून कंक्लूडिंग इट. सो यूएस और चाइना की बात करें तो राइवल्स फॉर द टॉप स्लॉट इन द पेंडेमिक ऑफ द वर्ल्ड. और न्यू ऑर्डर हैज बीन अगेन क्रिएटेड बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट, reliability of the partner and of course the economic factor. These are the three things that new world order would see after the post COVID-19 recovery. Now gated globalization framework की बात करें तो the term gated here means that every country is taking a restrictive approach. बहुत ही हिसाब से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही सूझबूझ के साथ हर एक कंट्री अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम कर रही है एंड इंडिया इज ऑन द सेम पैरामीटर. एक अनसेटल्ड टाइम से गुजरने के बाद एवरी कंट्री इज टेकिंग एट आउटमोस्ट कॉशंस. नाउ ग्रेडेड ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो दिस इज नेगोशिएटिंग द चेंज एंड स्ट्रॉन्ग फेंसेस आर क्रिएटेड in the new partnership. जैसे क्वाड्स हुई, क्वाड is again a beneficial for India based on the trust and common interest, right? And there's a need for new coalition that has left after डोकलाम. अभी तक जैसे हमने रिसेंटली डोकलाम देखा, पोस्ट लद्दाख के बाद जो ईस्टर्न लद्दाख में क्लैशेस हुई है चाइना के साथ, उस चीज़ों को देखते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड हैव अ गुड फ्रेंडशिप विद द कंट्रीज विच स्टैंड विथ यू एट द टाइम ऑफ योर डेफिसिट और एट द टाइम ऑफ यू आर एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम. ना रिस्ट्रिक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है चाइना पे, उसके कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस इंडियन इकोनॉमी पे भी हुए हैं. अगर बात करें कैपिटल फ्लो की तो इंडिया में कैपिटल फ्लो काफ़ी कम हुई है बिकॉज द ट्रेड, द इम्पोर्ट दैट वाज बीइंग डन विद द चाइना was in the बिलियंस डॉलर में ट्रेड होती थी, वो ड्रास्टिकली कम हो चुकी है. और इंडिया की जो कैपिटल अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट है दैट इज लार्जली ओपन विद करेंट अकाउंट एज केयरफुली मेजर्ड. तो करेंट अकाउंट डेफिसिट को भी ध्यान में रखना. जो कैड है, CAD इज अगेन अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अगर आपको नहीं पता तो डू रेफर इन योर इकोनॉमी बुक बिकॉज मेनी टाइम्स यूपीएससी टेंड टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन करेंट अकाउंट डेफिसिट. अगर ग्लोबल डायस्पोरा की बात करें तो वी हैव ऑलमोस्ट 30 मिलियंस एंड सेंडर्स ऑफ द रेमिटेंसेस. जो रेमिटेंसेस है जो कि दूसरे कंट्रीज से जो अर्नर है इंडिया में भेजते हैं, दैट ऑलमोस्ट स्टैंड फॉर 80 बिलियन पर ईयर. दैट इज इंक्रीजिंग ऑल्दो, बट कोविड-19 के बाद ये नंबर भी रिड्यूस हुए हैं. इट विल टेक अनदर एन ईयर टू कम टू द प्री कोविड लेवल. एंड मोर ओवर इंडियन डायस्पोरा इज नाउ इंक्रीजिंग, इम्पैक्टिंग ऑन द कंट्रीज लाइक यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम. और ऑस्ट्रेलिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन पॉलिटिशियन, टेक्नोक्रेट्स, इनोवेशंस, influencer, billionaires and the cricket captains, right? So the diaspora has changed a lot. From countries to country we have been significantly improving. और यूएस के साथ वी हैव ऑलरेडी अ गुड रिलेशनशिप, बट जब तक डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी वहाँ पे a very comprehensive thing had not been done in terms of agreement, and US has also not supported India in many global platform like अगर यूएनएससी की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जाए, तो वहाँ पे भी यूएस ने इंडिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं की है. बट द न्यू गवर्नमेंट that is again there by Joe Biden probably will be looking forward
for a country that would help a supporting hand for India in the another geopolitical arenas. Coming to the General Data Protection Regulation, this is an EU crafted regulation which calls for an excellent example of graded globalization, जहाँ पे EU ने engagement के लिए बहुत सारे शर्तें रखी हैं, and if the country do not comply with it, it tend to keep out that country. तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही फिल्टर आउट एक अप्रोच है जहाँ पे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की यूज की जाती है, एंड द सेम शुड बी यूज्ड बाय इंडियन लॉ टू प्रोटेक्ट द डेटा in the currently being discussed follow the sovereign route. So being India a democratic country where the fundamental right is pivotal for the country, Supreme Court had its own tools and keys. And talking about the other part of the data protection, Supreme Court has already stated that this is under the right to privacy and that has to be upheld at any cost, right? So government itself is coming with the data protection law. Still we do not have a data protection law in country. And talking about the recommendation from important committees in India, very soon I feel personally government would be coming up with the data protection law, but this is already being in practice in country like European Union. So a national standard should also be maintained with India ताकि हम इस standard की चीजों के साथ आगे भी काम कर सकें. Now coming to the answers of yesterday questions. So for the first question, the correct option here is A. Statement 1 is correct that our Earth has only one satellite, that is Moon. Its diameter is 1/4 and that of the Earth. It appears to be big because it's nearer to our planet and other celestial bodies. Second statement is incorrect that the asteroids are found between orbit of Mars and Jupiter, and the largest asteroid are Ceres. So if you want to read more about this, you can refer to the NCERT book of class 6th. So you can don't be strange about seeing the class 6 book, because from 6 to 12 that are the most important book that you need to study for the prelims examination. Make sure you have read all the content thoroughly. Now coming to the second point, the correct option here is C, that I've asked a question about the GSLV. So this is a 3-stage heavy lift vehicle developed by ISRO and India's first fully functional rocket to be tested on the cryogenic engine, right? So this has been the source of the reference is Science Reporter. Now MCQ's question of the day. The first question is from economy with reference to intercreditor agreement. Consider the following statement. It is a part of Project SISAP and it planned to address the problem of resolving bad loan, and it aims at resolving the loan account with the minimum amount of 100 crore rupees. So whatever you feel is the correct answer, you can let us know in the comment section down below. Do participate, write your answer in the comment section. Now moving to the second question from the polity, consider the following statement with regards to Prime Minister. The term of the office of Prime Minister is not fixed and he hold office during the pleasure of President, and the salary and allowances of the Prime Minister are determined by the President itself. So these are the two statements with regards to the office of Prime Minister and its working. So this type of question is relevant in your prelims examination. Make sure you are thorough with the concept of Prime Minister office, Vice President or the President. So you have to choose the correct option A, B, C, D and write the correct option in the comment section down below. Do participate, write your answer in the comment section. If you have any other queries with regard to questions, do let us know what sort of question you want to be included in the discussion session. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe Aptitude Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.